देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इंडिया के शहर बेंगलोर से शरीक गुफ्तगू हैं सोनम महाजन। सोनम का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और ये बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हैं और ये अपना टाइम जो है वो बेंगलोर और दिल्ली के दरमियान डिवाइड करती हैं। इनकी डिग्री तो मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में है, लेकिन आजकल ये पाकिस्तान को बहुत दिलचस्पी से वॉच करती हैं और कहती हैं कि वो ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर हैं। वेलकम टू द शो सोनम। Thank you so much for inviting me. It's such an honor to be with you on the same platform. Must confess, I'm a big fan, sir. Thank you very much. So Sonam, how did you become a Pakistan watcher? क्या थी वजह? Okay, it goes back to 2015. I was an avid Twitter user even then, but I wasn't commenting on politics. And I still remember एक handle था go Nawaz go ऐसा कुछ लिखा था उसमें. Okay. And they were commenting on my appearance and my choice of clothes and calling me all sorts of names. So I kind of decided to like dig in and see what really makes such a mindset that somebody is judging me based on my appearance. And I had nothing to do with them, they had nothing to do with me. पता नहीं एक्सीडेंटली कहाँ से हमारा कोई बात ट्विटर पे किसी चेन पे हम मिल गए एंड there was a quick attack on my appearance and my lifestyle, and the kind of clothes I wore. So that got me interested, and then I started to understand. I started to feel the urge to understand Pakistan as a country, that why people there are so close-minded. That's how it started with me. Even though we were affected by Pakistan in so many ways while I grew up in J&K, but somehow I never paid so much attention to Pakistan because we were mostly told, okay, this is all politics and every country is good, and that's how we grew up. But this particular incident triggered me to know more about the Pakistani society, as to how do people think there, and yeah. अच्छा, मेरा ख्याल हम ज्यादा इसको उर्दू और हिंदी में रखें जी तो बहुत से लोग शायद समझ ना पाए अंग्रेजी। राइट तो ये बताइएगा कि अभी आप किन पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर्स को फॉलो करती हैं और किन से वाकिफ हैं? ओके, यू आर देयर, आप हैं उस लिस्ट में. मैं मतीउल्लाह जान को बहुत फॉलो करती हूँ. उनका MJ TV जो है वो मेरा फेवरेट है. जी जी। फिर मैं सैयद तलत हुसैन को फॉलो करती हूँ. कभी कभी मंसूर अली खान को भी करती हूँ. ओके। नजम सेठी को भी फॉलो करती हूँ मैं. हसन हसन निसार साहब को एक टाइम पे करती थी, अब नहीं करती हूँ. As and when I get time, I also try to look up as to what Parvez Woodbhai has done recently. But ardent follower, अगर आप बोलेंगे तो I watch everything that you create, Matiullah Jan creates, and more or less of what STH Syed Talat Hussain does. Yeah, and in politicians, I particularly like this guy called Rana Sanaullah Khan, the interior. He's handling interior, right? इंटीरियर मिनिस्ट्री, या ओके। तो पाकिस्तानी जो हैं जिस तरह से इंडिया को देखते हैं वो कैसा लगता है आपको? शुरू में तो काफी शॉकिंग लगता था, जब शुरू में मुझे समझ में आया कि दिस इज ऑल हेट. इट ऑल्सो एमिनेट्स अ लॉट फ्रॉम रिलीजियस बायस. पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि कश्मीर मसला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इग्नोरेंस ये मसला है. तो काफी एब्सर्ड लगता है ओवरऑल कि मतलब देयर आर स्टिल पीपल who are stuck in that medieval mindset of having to judge each other based on the religions that we follow, or the color, and uh, it looks like a problematic thing to me. तो क्या क्या आपको ज्यादा किस चीज ने शॉक किया, किस चीज से कि क्या है पाकिस्तानियों को जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, क्या खराबी है उसमें? जी, एक तो मुझे लगा जो वहाँ का करिकुलम है, दैट्स एक्सट्रीमली आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली बायस्ड. एंड उससे मुझे काफी शॉक लगा कि वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू और जो सिख हैं ये इंसानी दुश्मन है.
एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अभी निकली थी कुछ देर पहले, जिसमें दे हैड कॉल्ड सम हिंदू स्टूडेंट्स who elaborated on what they were getting taught in the school and how they were getting harassed because of their religious identity. तो ये मुझे काफी शॉकिंग लगता है कि वहां पे इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं, एंड यू नो इवन दो मैंने सुना है कि अभी काफी लोग उसको चैलेंज करने लग गए, एंड चेंज हैज स्टार्टेड टू हैपन, कि इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है. बट मुझे ये थोड़ा हैरानी होती है कि ऐसा कैसे है कि इतनी जनरेशन ये पढ़ती रही और उन्होंने कभी इस पे एहतजाज नहीं किया कि यार ये आप हमें क्या पढ़ा रहे हो. क्योंकि अगर इंडिया में ऐसा कुछ पढ़ाते तो पेरेंट्स भी इस पे एहतजाज करते कि आप किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट प्लीज हमारे बच्चों को जो है इंडोक्ट्रिनेट मत करो. तो थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा कि वहाँ पे जो एजुकेशन है, समवेयर आई थिंक पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड इन दैट फील्ड. आप बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रही हैं वो तो उर्दू में थी, वो मैंने देखी है, तो आपने उर्दू में देखी या हिंदी में देखी वो? मैंने उर्दू में देखी, क्योंकि मैं उर्दू लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, और कुछ एक्सटेंड तक बोल भी सकती हूँ. तो मैंने उर्दू में देखी थी. अच्छा, तो कोई पाकिस्तान का उर्दू अखबार भी आप पढ़ती हैं, जांग या नवाए वक्त या एक्सप्रेस? नॉट रियली, लाइक आई सेड कि मेरी प्रोफिशिएंसी जो है वो मतलब इट्स गुड टू एन एक्सटेंड बट इट्स नॉट वेरी ग्रेट. तो मेरे लिए अंग्रेजी को पढ़ना समझना ज्यादा आसान है, बट आई हैव फॉलोड सम कॉलम्स हियर एंड देयर इन जंग एंड नवाए वक्त. बट मैं फ्राइडे टाइम्स भी पढ़ती हूँ, इवन दो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एट टाइम्स, बट आई डू रीड फ्राइडे टाइम्स ऑल्सो. तो आपकी पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर्स के साथ डिस्कशन भी होती रही है, डिबेट भी होती रही, मसलन कमर चीमा से, और भी कोई आपके साथ इंटरेक्शन करते रहे डायरेक्टली टीवी चैनल्स पे? Um, Not really. I believe in making less friends and quality friends who you could rely upon. So even though a number of people have reached out to me from Pakistan, but I always take it with a bit of cautious optimism, because हमारे यहाँ पे इस तरह के वाकयात भी हुए हैं where people have got tricked into friendships, and then they've been embroiled in unnecessary controversies. So I try to keep my contact very productive and as minimal as possible. But yeah, I do speak to Kamar Chima very often. I also have access to Alia Shah, and I got called on a number of TV shows from the Pakistani side. But unfortunately, the kind of anchors that I would have liked to speak to, they didn't call me. So, जिन्होंने बुलाया था, I just did not want to be a part of that circus because I know how the mainstream media works on both the sides. So, yeah. अच्छा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से आप किसी पाकिस्तानी से बात करें तो वो कहेगा कि जी बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम गुर्बत और ये जो मसाइल हैं हमारे, डिजीज़ और हंगर, उनसे हम निकल सकते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला पहले हल होना चाहिए। तो आप इस आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या कहती हैं? Um, I think again a very problematic approach, which I have seen a lot of Pakistanis seem to be like suffering from that kind of a mindset. See, I mean, there will always be issues between different nations. In India, I'll tell you largely when actually हमारे यहाँ पे reverse हुआ. I'll tell you how. जब हम लोग when we were growing up, we were told that इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का एक मसला है. We used to only think that कि हमारे बीच में कश्मीर का डिस्प्यूट है. Slowly we started to figure it out कि कश्मीर का मसला अगर हल हो भी जाए ना, even then, I mean, Pervez Musharraf has said it on record that a low intensity conflict will probably forever be on with India. So slowly we have started to realize that it's not one problem, it's a number of issues which actually make us hostile to each other. And the Pakistani curriculum has a lot to do with that. So I do not really blame an average Pakistani on the Kashmir issue anymore, because जब मुझे पता चला कि वहाँ पे किस तरह से इसके बारे में बताया जाता है and people have been miseducated, तो मुझे उससे थोड़ा सा ये समझ में आया कि वहाँ के लोग जो है they have also been martyrs of disinformation. It doesn't come to them naturally the way we used to think. बट अब इंडिया में जैसे पाकिस्तान में क्या है, वहां पे स्टार्ट किया गया एक लोगों को मतलब
इडियोलॉजिकली भड़काना, तभी तो आप स्कूल में पढ़ाएंगे ना हिंदू और सिख इंसानी दुश्मन है, क्योंकि आप एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटीज के अगेंस्ट इंडोक्ट्रिनेट करना चाहते हैं, यू हैव अ क्लियर इंटेंशन देयर। तो वहां पे इट स्टार्टेड लाइक दैट, एंड नाउ a lot of people seem to say no, no, there is only one issue between us, it's Kashmir. पहले वहां के लोग ऐसा उनका मौकफ रहता था कि नहीं नहीं, वी आर टू डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड यू नो वी आर टू डिफरेंट पीपल एंड वी कैन नेवर को एग्जिस्ट। अभी पाकिस्तान से जो नैरेटिव मैंने देखा है मोस्टली ये पुश होता है कि वी हैव वन आउटस्टैंडिंग इशू एंड ऑल इज गुड। बट अभी इंडिया में उसके बरक्स हो रहा है। इंडिया में I don't know, this truth or this realization seems to have dawned upon so many people that even today, when I make an effort to have a space where I also have Pakistani people, so that people can talk to each other, बहुत सारे इंडियन से रेजिस्टेंस आता है। अब वो बोलते हैं कि नहीं, इनके साथ हमारा कोई कश्मीर का इशू नहीं है, ये हमारे पीछे पड़े ही रहेंगे, जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा हो जाएगी ये बोलेंगे टू नेशन थ्योरी लगा दो। तो यार दीज आर सिंपली नॉट द पीपल दैट वी कैन डील विद, ये अलग वायर्ड है, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो। तो अभी इंडिया में ये स्लोली जो नैरेटिव है ना, ये शिफ्ट होता जा रहा है एंड इट्स वेरी स्कैरी। क्या कि कश्मीर में कैसी है सिचुएशन, क्या है वहां? आई थिंक लार्जली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे एक्टिव थी, जिनको फॉरेन सपोर्ट भी था, अभी तो वो स्ट्रगल कर रही है टू रन देयर ऑपरेशंस, क्योंकि मुश्किल हो गया है अभी। इवन इन्फिल्ट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमने रिसेंटली देखा है कि थोड़ा सा चेंज भी हुआ है पाकिस्तानी साइड से, कि जम्मू के जो हिस्से हैं ज्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो जो जम्मू है उसको हम नया फ्रंटियर मानते हैं इंडिया में, अगर हम देखें ना जम्मू कश्मीर का। क्योंकि कश्मीर को तो अब क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इतना कवर कर चुका है, और लोगों का एक ऐसे परसेप्शन हो गया कि वहां पे तो रोज टेररिस्ट जो है वो मरते रहते हैं और वो आर्मी वालों को भी हर्ट करते रहते हैं। बट जम्मू में जब कोई इस तरह का वाक्य होता है तो इट पिक्स अप स्टीम एंड द नेशनल मीडिया आल्सो पेज इट अटेंशन, द गवर्नमेंट गेट्स वरीड कि ओके, जम्मू इज अ हिंदू मेजॉरिटी एंड इट वाज यू नो प्राइमरली पीसफुल, तो वहां पे क्यों इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने देखा है जम्मू में एक्टिविटी बढ़ गई है, और कश्मीर में हमने देखा है कि जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको ज्यादा रूम नहीं मिल रहा है। तो उसी डेस्परेशन के नतीजे में वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं बार बार, जैसे किसी की एक लोन किलिंग कर दी जस्ट टू क्रिएट पैनिक कि ओके द टेररिज्म इज नॉट डेड एज येट। But I think the biggest testimony to the fact that terrorism is primarily dead in Jammu and Kashmir is India hosting the upcoming G20 summit in the Union Territory of Jammu and Kashmir. I think that's a huge move, and you can only make that move. I mean, God forbid, सब अच्छा रहना चाहिए, but you can only decide that move अगर आपको पता है कि you have the capacity, ability, and the capability to basically host such important guests, and you have the desired infrastructure also. So yeah, so I think terrorism has been smashed in the recent years. तो श्रीनगर में कितने हैं इस वक्त, मिलिट्री ट्रूप्स कितने हैं? They are certainly in thousands, not in lakhs, as the Pakistani media would like the world to think. India की total जो military strength है, active जो personnel है, it's close to 13 lakhs, slightly above that now. तो बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं जो ऐसा कहते हैं कि इंडिया में 10 लाख की मिलिट्री लगी हुई है। तो भाई, तो इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है ना, इंडिया में कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो इंडिया में जो मिलिट्री है वो नॉर्थ ईस्ट में भी लगी हुई है, इंडिया में मिलिट्री लद्दाख में भी लगी हुई है, जम्मू में भी लगी हुई है, कश्मीर में भी लगी हुई है। और लोग ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि मिलिट्री जो एफ्स्पा वहां लगा था वो कश्मीरी पंडित एक्सोडस के बाद लगा था, राइट। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा मिलिट्री लगी हुई है, आप बता दें जो बलोच हैं उन्होंने वो अब जाके वो ये हरकतें करने लगे हैं दैट दे आर टारगेटिंग लाइक यू नो कॉमन सिविलियंस एंड फॉरेन डेलीगेट्स एंड ऑल दैट। बट इफ यू लुक एट देयर हिस्ट्री, they have just been resisting against the forces, Pakistani forces. You, on the other hand, you see in Kashmir, civilians were targeted. A whole community which had strength over 5 lakhs, उनको ओवरनाइट वहां से निकाल दिया गया। आज तक वो रिफ्यूजीज ही हैं अपने खुद की कंट्री में। तो आर्मी जो है वो इस सारे जो ये इस तरह के कांड हुए थे उनके बाद लगाई गई थी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है अपनी खुद की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रखने का थ्रू फोर्सेस। इट डजंट मेक सेंस बिकॉज इट्स अननेसेसरी एक्सपेंस। एंड आई वुड टेल यू,
not me or an average Kashmiri or an average any citizen of Jammu Kashmir, हम वहाँ के बाशिंदों से ज्यादा अगर किसी को कश्मीर छोड़ने की जल्दी है ना कि आर्मी छोड़े, हमसे ज्यादा जल्दी वो खुद आर्मी वाले को है. He also doesn't want to be there. I mean, he has no incentive, right? हमें ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे लगा के हमें दूसरे के ऊपर चढ़ाई करनी है और हमें उनका हिस्सा लेना है. हमारे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है. We are just defending our own territory. और सीआरपीएफ जो है वो कितने होंगे श्रीनगर में? I'm not sure about the exact numbers, but as far as I know, this is what I got told by a senior officer in CRPF, that primarily in Srinagar city, you will only find CRPF and the state police jo hoti hai. Army is mostly at the borders. Contrary to what is peddled in the Pakistani media ki Bharti Fauj, army jo hoti hai wo borders pe hoti hai. They are not in the cities. They're only called for specific operations, but as per my know how जो श्रीनगर में ज्यादातर ऑपरेशंस होते हैं वो सीआरपीएफ और पुलिस मिलके करती हैं, बिकॉज सीआरपीएफ इज अगेन दे आर रिजर्व्ड पुलिस व्हिच कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री इंस्टेड ऑफ डिफेंस. सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू डील विद मैटर्स व्हिच कुड इन्वॉल्व सिविलियंस. Army, on the other hand, they are a little tough, even though they have earned a lot of goodwill in Jammu and Kashmir in the recent years because of their like initiatives about education primarily. So बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो वॉलंटरीली बच्चों को ये यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, गरीब बच्चों की क्लासेस ले लेना, मतलब बहुत आप सुनेंगे अगर ग्राउंड पे स्टोरीज तो बिल्कुल ही अलग है मीडिया में जो दिखाया जाता है. तो श्रीनगर में मोस्टली इट इज सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस, और श्रीनगर सिटी में थोड़े इस तरह के वाकयात हो भी नहीं पाते हैं. थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आप देखेंगे 2-3 प्रॉब्लमैटिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर डिवीजन की, जैसे कुलगाम है, पुलवामा है, ये जो है बुड़गाम है, यहाँ पे आपको ज्यादा ये नोटोरियस एक्टिविटीज मिलती हैं. श्रीनगर में आपको इसी तरह के अटैक्स मिलेंगे जैसे किसी सिविलियन को मार दिया, एक लोन वुल्फ किस्म का अटैक, दैट वी सी मोर एज लाइक वो कहते हैं ना बुझने से पहले वो दिया फटफड़ाता है. एंड आई टेल यू, आई एम आल्सो प्रिवी टू इंफॉर्मेशन दैट there are currently also camps in Srinagar run by the army where they de-radicalize people जो मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो वापस आना चाहते हैं. तो अभी जैसे कल या परसों ही लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने उनकी फैमिली की अपील की वजह से उन्होंने हथियार डाल दिए एंड दे सरेंडर्ड. और फिर उन्होंने वीडियोस में बोला कि प्लीज इस रास्ते में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि ऐसा हुआ है जैसे बहुत सारे यंग लड़के हैं, तो हाउ दे स्टार्ट इज दे विल लाइक somebody will reach out to them over social media, और ये बच्चा जो है डिसोरिएंटेड है क्योंकि मिलिट्री रूल में रहना आसान नहीं है. Ask me, I'm from Jammu Kashmir, so it's not easy to live where you have a lot of military and you know, so certainly the Kashmiris also don't like that bit. तो some of these people when they're disoriented and जहाँ पे military rule होता है तो you cannot say कि वहाँ पे 100% जो है rights जो हैं आपके वो protected है, वहाँ पे violations जरूर होती हैं. तो थोड़ा भी कोई बच्चा डिस्ग्रंटल्ड होता है अगर, तो वो क्या करते हैं कि रीच आउट करते हैं, हैंडलर्स होते हैं पाकिस्तान की पीओजेके की तरफ, उनसे बातचीत करके देन यू नो दे आर टोल्ड कि आप ये करो, अब हमारा विश्वास जीतने के लिए गो अटैक समबडी. तो अदरवाइज हाउ डू वी नो कि आप इंडियन स्टेट के साथ काम नहीं करें, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं ना. देयर वाज अ होल फोर्स कॉल्ड इख्वान फोर्स. These were militias which were raised by Pakistanis to fight against the Indian state. और they like turned approvers later. उन्होंने बोला we will fight for India rather and eliminate terrorism. That's a different story that the Indian state couldn't take care of Ikhwanis. But I recently, when I was in Srinagar, I met one ex-Ikhwan. One guy who joined Ikhwan. He's now, I think, trying to get into mainstream politics. So it was very enriching, whatever he told me, how you know they were radicalized and how he decided to move away from terrorism and fight for his people. So yeah, very interesting. और फिर ये लोग जब इनसे कुछ ऐसा काम करवा देते हैं वायलेंट एक्ट, सिर्फ कि ये तुम हमारा भरोसा जीत के बताओ, फिर व्हाट आई हैव हर्ड इज वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और फिर अगर ये बच्चा कल को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आई वांट टू लीव यू, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो हम नहीं मारेंगे तो फौज मार देगी, हम उनको दिखाएंगे कि ये अटैक तुमने किया था. तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ऑफ कोर्स द फौज वुड नॉट वांट कि मीडिया इसको कवर करे, एंड यू नो पीपल गेट टारगेटेड अननेसेसरीली फॉर हैविंग लेफ्ट टेररिस्ट रैंक्स.
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कश्मीर में, जहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं जो छोड़ना चाहते हैं, तो उनको फिर फौज जो है वो उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, साथ में उनको पूरा उनकी काउंसलिंग होती है, उनको डी रेडिकलाइज किया जाता है, और sometimes they are also sent to other states so that their lives are not at risk anymore. So a lot of youngsters are also like shunning the terror ranks that they once joined with so much vigor and expectation. अच्छा, पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ये है कि जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस वक्त से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं इंडिया की माइनॉरिटीज के लिए और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के लिए। आप क्या कहते हैं इस आर्ग्यूमेंट के बारे में? Well, अगर मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आई थिंक दिस doesn't even deserve an answer, because in Pakistan, Nehru and Gandhi, who are today like seen as figures who propagated peace, उनको भी demonize किया गया था, and they were called like representatives of the Hindu community, a grand fascist party, as Muhammad Ali Jinnah would like to call the Congress party. So it seems like the hate has always been ideological, and no matter who comes to power in India, the current ruler will always be hated the most. I'm sure agar kal ko koi aur bhi aayega to people will start to say that, oh, Modi's era was better. So I don't see any seriousness in that argument. But to respond to कि मतलब इंडिया में एक एंटी मुस्लिम भी सेंटिमेंट है मोदी जी के आने से and all that. See, a lot of Pakistanis tend to see it from the perspective of Islamophobia in India, and Indian, primarily Hindu communities' bias against Muslims because of the Islamic conquest of India. In India, especially in the strategic circles, हमारी understanding ये है चौधरी साहब, हम ऐसे समझते हैं कि this is a part of that global phenomenon of Islamic separatism. Okay, the moment you start to show that you are now going to be intolerant of the institutionalized bigotry that divides people into believers, non-believers, and things like that, which have no meaning in today's world and time. I think it is more to do with the rise of right wing across the world. If you see any country today, the right wing जो ये जमाते हैं, they are picking up steam slowly and they are getting elected to power. So I think that has to do more with that global sentiment of seeing Muslims as people who do not want to merge with other religions and people, and having that separatist, fundamentalist mindset of living in that illusion of transnational Muslim brotherhood. Even though, I mean, I can give you 10 arguments right now which will poke holes in that whole narrative, कि मतलब I don't think that Muslim brotherhood exists at all today. I don't see that happening. सो जो लोग उस नोशन में जी रहे हैं कि हम हमारा एक अपनी एक मुस्लिम उम्मा है, हमें उसके साथ चलना है, आई थिंक दे आर द पीपल हु ओनली हैव टू लूज इन द लार्जर रन, बिकॉज आप जहां पे रहते हैं, आई वुड से इवन इंडियन हु लिव्स इन द यूएस, his primary interest should be with the US and not be with India. जो कंट्री आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जहां पे आप टैक्स भर रहे हैं, आपको उसको साथ को लेके चलना पड़ता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमने मुस्लिम्स में थोड़ा सा ये नोटिस किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, दैट उनमें ये फीलिंग जो है ये बहुत ज्यादा है, मुस्लिम ब्रदरहुड की. एंड इवन द पाकिस्तानीज दैट आई सी इन पाकिस्तान, द मोमेंट आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट कई लोग वो शो ही स्टार्ट करते हैं ना, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद से करते हैं. ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, आप ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर योर नेशन, बट वो जज्बा ना मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा है behavior may, but it does not reflect in like actions. Otherwise Pakistan would be doing a lot better than what it is doing today. अच्छा, आपको पता है ना कि यहाँ पे काफी इस तरह का मीडिया में जिक्र आता है कि बीफ लिंचिंग हो रही है और एक अखलाक का केस था एक, ये जो केसेस हैं इनके बारे में आप क्या कहती हैं? Right. Of course, there have been mob lynchings in India, and both Hindus and Muslims have been victims of it.
But unfortunately, only one side is projected. But I am somebody who would go by data and statistics. If somebody can prove it to me that mob lynchings victims have only been Muslims, in fact, I can. People always hesitate to speak about this love jihad thing in India, but I mean, I don't even feel the need to explain it to anymore. You can go right now and search love jihad and see the kind of news reports it will generate, where the modus operandi is same, a girl getting tricked into a marriage by faking your religious identity. And similarly, this beef angle has been getting used by certain forces within India and forces outside, which are probably not so friendly to the current government. They will keep breaking this up. जैसे अखलाक का जो issue है, nobody in India except for a few platforms which would identify as right-leaning platforms. Some of them are also like the mouthpieces of the present government. इन लोगों के बजाय किसी ने भी वो फैमिली जो थी ना अखलाक के साथ जिनकी झड़प हुई थी, दूसरी फैमिली, हिंदू फैमिली, उनका वर्षन ही नहीं दिखाया. There's only one magazine, I think it is स्वराज्य. उन्होंने उनके कुछ रिपोर्ट्स शुरू में किए थे. उनकी एक रिपोर्टर है और वो इन केसेस पे मतलब उनकी स्पेशल पकड़ है, वो इसी के ऊपर इसी को ज्यादा कवर करती हैं. Their family also has a version that, when their animal was stolen, according to them, they had a confrontation with their neighbor, and it was their son who got shot. उसकी उन्होंने फोटोज भी दिखाई अस्पताल से भी. एंड उसके बाद अखलाक को सरकार ने बहुत मुआवजा दिया है. दे हैव डन एवरीथिंग इन द स्टेट हैज डन एवरीथिंग इन इट्स कैपेसिटी. ऑफ कोर्स आप किसी की जान को तो कभी भी आप भरपाई नहीं कर सकते. देयर इज नो वे यू कैन डू दैट, बट the only thing that you can do is like make the life of the kin of the victim, at least make it better. So state has done everything in its capacity to do that. But we don't see when Hindus are victims, like in this particular case also, the Hindu family got absolutely no media attention. It was only some right-leaning portals who were going there and covering their version. But we only saw one version. फिर there was another case, एक जुनैद का केस हुआ था, ट्रेन में किलिंग हुई थी. Victim turned out to be a Muslim guy, a young guy. And उनकी जो फैमिली ने जब पहले कंप्लेंट की, इट वाज अ केस ऑफ हरियाणा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने पहले कोई बीफ एंगल नहीं डाला था. बट बाद में उसमें बीफ एंगल आ गया कि इसको मारा, ये पूछा कि तुम बीफ खा के आए हो, एंड उसको रिलीजन को लेके गालियां दी. बट जब वो कोर्ट वर्डिक्ट आया तो उसमें हमें पता चला कि उनका झगड़ा जो था वो एक ट्रेन की वो सीट का वो बर्थ होता है उसके ऊपर हुआ था. और हाँ, इन द प्रोसेस जब उनकी लड़ाई होने लगी तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब जो मजहबी नेम कॉलिंग होती है वो भी करने लग गए. बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ फाइट ओवर अ ट्रेन बर्थ. बट हाउ इट वॉज प्रोजेक्टेड अक्रॉस मीडिया इन इंडिया, आज तक उस केस को बहुत लोग कोट करते हैं जुनैद के, बट आई एम श्योर दे हैव नॉट रेड द वर्डिक्ट that it had no beef angle. Recently, there was another case called a young boy called Shayan from Bangalore. मदरसा में पढ़ता है ये बच्चा, और इसने अपने खुद ही कपड़े फाड़े पेन से, और फिर ये बयान देता है कि कुछ लोग आए थे भगवा कपड़े पहन के, उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए. एंड ऑफ कोर्स इट वाज इंस्टेंटली कवर्ड बाय द मीडिया कि एंड इवन व्हेन आई सॉ इट, इट वाज वेरी अलार्मिंग फॉर मी आल्सो दैट नाउ इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू वायलेंस एट सच अ बेसिक लेवल दैट किड्स आर गेटिंग टारगेटेड. बाद में जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो देखा कि वो बच्चे ने इंक पेन से अपने कपड़े खुद ही फाड़े हैं. एंड ही सेड आई वाज नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन एट होम और एनीवेयर, सो आई डिड इट फॉर अटेंशन. नाउ आप किसी दूसरे बच्चे को एक्यूज कर देते, आपने एक पूरी कहानी बनाई, तो आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ इट इज रॉन्ग, बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड मेड अप टू क्रिएट a narrative of some ongoing discrimination against Muslims because Modi is the ruler. So I certainly see that there is a lot of disinformation also, which can easily be like debunked, but people do not put that kind of an effort. आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट्स देखी होंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो बीच में रुकावट है. तो क्या आरएसएस मिसअंडरस्टूड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में? क्योंकि उन्होंने तो इसको हिटलर के साथ भी लिंक किया है कि जी आरएसएस लीडर्स जो थे दे ड्रू देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम हिटलर. किस हद तक सही है ये बात? वेल, इंडिया में जो जूइश कम्युनिटी है, सिंस यू ब्रॉट इन हिटलर, दे फील दैट इंडिया वाज द ओनली स्टेट कि जब उनके साथ होलोकॉस्ट हो रहा था, क्या क्या हो रहा था, इंडिया वाज द ओनली स्टेट व्हिच वाज ओपन टू
welcoming the victims and people who needed refuge. And that reflects in our foreign policy even today. Israel always brings that up, that our connection with India is also rooted in that hospitality that India showed when our people were getting persecuted. Um, drawing these conclusions that, okay, the RSS sympathized with Hitler, I don't see there is any scientific base to that. It is more of, he said, she said, and the RSS has time and again challenged this, but unfortunately, that's what happens. People will accuse you of doing one thing, and then they will not even bother to say sorry when they're proven wrong. इनफैक्ट गांधी की किलिंग को आरएसएस के साथ रिलेट किया जाता है. नाथुराम गोडसे हैड लेफ्ट आरएसएस एंड फॉर्म्ड हिज ओन group before killing when he killed Gandhi. He was not a part of the RSS anymore. RSS had already, like, he had distanced himself from them, saying you are not dedicated enough to the Hindu cause. So coming to Imran Khan, I think he doesn't have the credentials in the first place to even comment on that. See, you can comment on religious fanaticism or indoctrination or Hindutva fascism rising in India if you propagate uh, the idea of a secular Pakistan, right? You only have these credentials then. Now, here is a guy, Imran Khan. He goes to the UN. He only speaks about Islamophobia and Hindutva fascism and RSS ne ye kiya and India ye karta hai. I've never seen him speak about food security. I have never seen him speak about energy. I have never seen him speak about education, climate change, which is staring both India and Pakistan in our faces. We are like on the top list. He only speaks about religious fanaticism in India, while every time वो कभी आप उनको देखेंगे कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, अपनी कोई भी वो तकरीर शुरू करते हैं तो पहले वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला अल्लाह इल्लल्लाह, ठीक है, वो कलमे से स्टार्ट करते हैं. He doesn't even factor in the minorities in Pakistan because they are non-Muslims, right? Not everybody can believe in Islamic ideology. Now, this is a guy who's completely insensitive to the sentiments of the minorities of his own country, that he used to claim that they will cease to be minorities once I'm the prime minister. तो ये एक अलग लेवल की मुनाफकत है इमरान खान साहब की. आई वुड से वो तो बिल्कुल क्वालिफाइड ही नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई भी तनकीद करे, बिकॉज उनकी खुद की आप उनकी पर्सनल लाइफ देख लीजिए, जो प्रीच करते हैं उस सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शंस आपको मिलेंगी. द लाइफ दैट ही हैज लिव्ड एंड द लाइफ ही वांट्स एन एवरेज पाकिस्तानी young man or woman to live, it's completely different. वो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जब वो पावर में नहीं थे तब वो कहते थे कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से लड़ूंगा, इनको मैं बताऊंगा कि डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जाता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द मिलिट्री. आज वही इमरान खान है जो पाकिस्तान आर्मी को गाली दे रहे हैं for allegedly being neutral at this point in time. So I think nothing that he says and he practices seems to match. So I think Imran Khan, of all the leaders Pakistan has had, I think he's the most irrational, most immature leader who cannot be taken seriously by anybody. And I'm glad Mr. Modi made him feel the way he made him, because this guy deserves no attention. He has a loud mouth. He will utter anything anywhere. That's not how the prime minister of a country behaves. लेकिन ये आपको पता है कि 2015 में 2015 में इमरान खान वाज इन दिल्ली along with his associates and he sought a meeting with Prime Minister Modi and he got a meeting. तो 2015 में इनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में और उन्होंने इनवाइट भी किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को पाकिस्तान आने के लिए. Right, and he seems to hide that fact. In fact, PTI की एक है, वो उसमें शायद कारकुन है या फिर कोई लीडरशिप पोजीशन पे है, शिको उनका नाम है, पाकिस्तानी है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. अक्सर मेरी स्पेसेस में भी वो आते हैं. तो इनफैक्ट उन्होंने भी मुझे उस दिन ये बात बोली कि हाँ, मुझे तो पता है कि वो मीटिंग अरेंज भी किसने की थी. एंड आई नो कि इमरान खान बहुत जो वो सोचते हैं और वो जो कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है.
तो इमरान खान साहब वही शख्स हैं जो इंडिया आए, उन्होंने मोदी साहब से मीटिंग भी ली, वो उनसे मिलना भी चाहते थे, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर मोदी आल्सो न्यू दैट इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, सो ही आल्सो met him. And Imran Khan has had a lot of good things to say about Mr. Modi. For example, जब उन्होंने ये कहा कि अगर कश्मीर का कोई मसला रिजॉल्व कर सकता है तो यही कर सकता है, I agree with him there, but my reasons are different. See, I mean, uh, Mr. Modi, he went to Pakistan, he was advised against it. उनको कहा गया था कि ये आपके पॉलिटिकल करियर के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है और सिक्योरिटी के लिहाज से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अदरवाइज ऑल्सो इट्स लाइक अ पॉलिटिकल सुसाइड बिकॉज you will be upsetting a lot of your core followers who believe in inherent hate for Pakistan. But he still took that step as the highest diplomat of a country. The prime minister is the highest diplomat. He took that decision, barring the cost it came with. So I think he has the political capital, he has the power, and he has the support of the public that he can pull off decisions which are not very popular. So from that perspective, I think I'm sure that if Mr. Modi says something about Kashmir tomorrow, which, you know, a decision which may not be acceptable to masses otherwise, but I'm sure when he says it, it automatically lends some credibility to this case that, okay, here is a guy, he's been donating all his salary to the cause of women, and there are no allegations of corruption against him, and he anyways intends to spend the rest of his life in the Himalayas. So he doesn't really have any stakes. उनकी अगर आप फैमिली भी देखेंगे तो they live a very very simple life. मतलब अभी पीछे वो अपनी माता जी से मिलने गए थे उनके जन्मदिन पे, तो जो उनकी दीवार थी ना पीछे, उसमें पपड़ियां निकल रही थी, वो सेजल आ जाती है ना, नीचे गिर रहा था, वो सफेदी गिर रही थी. तो यू कैन, आई मीन, इमेजिन दिस इज द लाइफस्टाइल हिज फैमिली आल्सो हैज. तो आई थिंक उनकी बात में इतनी क्रेडिबिलिटी है कि सच है झूठ है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट at least this is the perception in India that when Mr. Modi says something, most of the people who are his core supporters, they will agree to it more or less, thinking, okay, this guy will anyway not do anything which is not in the interest of nation. But अगर जैसे वो पाकिस्तान गए, अगर कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर गए होते तो उसका जो बैकलैश है वो अलग लेवल का होता, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी इसी तरह के इल्जामात लगते हैं. और अभी एक रिसेंट वो जो किस्सा भी हुआ नुसरत मिर्जा का, तो अभी वो काफी हमारे यहाँ पे द पॉट इज बॉइलिंग एंड एवरीबॉडी इज बिजी ब्लेमिंग ईच अदर विदाउट हैविंग एनी अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, मेरे साथ भी किसी ने एक दफा बात करते हुए ऐसे कहा था कि जी जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो रिलेशंस जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर नहीं हो सकते. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मोदी जी के आने से पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान दूध और शहद की नहरें बह रही थी क्या, कि अचानक वो खत्म हो गई? तो ये तो खैर बड़ा बड़ा ही सुपरफिशियल आर्गुमेंट है. और ये खुद भी, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि उन्होंने कहा था, अपना इमरान खान ने कहा था कि मोदी जी अगर जीत गए इलेक्शन तो ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि रिजॉल्व हो जाएगा कश्मीर का इशू. तो मैम ये बताइएगा कि क्या है, अपना बेंगलोर में आप रह रही हैं, तो बेंगलोर इज कंसिडर्ड ए हब ऑफ आईटी कंपनीज. तो हाउ हैज, किस तरह से ये शहर जो है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है? एंड कुड यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन? कितनी एक्सपोर्ट्स होंगी आईटी की इंडिया की? इज इट 150 बिलियन Yeah, डॉलर्स? you're right. It's already exceeding that. But I'll tell you, when I came to Bangalore, it was in 2008 actually. And मतलब बहुत सारे हिस्से इस शहर के ऐसे थे जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, जो अभी भी मतलब आउटस्कर्ट्स गिने जाते थे. आज वहाँ पर मतलब भर भर के आईटी पार्क्स हैं, और बैंगलोर में तो आई थिंक दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंपनीज हैं बैंगलोर में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो. मतलब यहाँ पे पीपल आर दे हैव दिस entrepreneurial mindset. And of course, most of the IT companies in India, they have their headquarters in Bangalore. They also have a significant presence in Chennai and Hyderabad and Gurgaon. But most of them prefer to have their headquarters in Bangalore because Bangalore is a cosmopolitan city. If you compare it to Hyderabad or Chennai, which is further down south, um,
बैंगलोर का कल्चर ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है. देयर इज मोर टॉलरेंस फॉर डाइवर्सिटी, एंड यू विल सी मोर नॉर्थ इंडियंस प्रिफरिंग टू कम टू बैंगलोर दैन probably go to चेन्नई और हैदराबाद बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. बिकॉज एक तो कन्नड़ा जो लैंग्वेज है बैंगलोर की, इट्स वेरी क्लोज टू संस्कृत. तो आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो. और समहाउ जो कन्नडिगास हैं, they are more open to learning Hindi, and compared to probably other states, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लोग ओपन हैं हिंदी सीखने के लिए भी और अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए भी. सो दैट लैंग्वेज, आई डोंट नो इफ आई कुड यूज द वर्ड शोविनिज्म, या फिर वो जो एक जुनून होता है ना अपनी लैंग्वेज को लेके कि भाई ये हमारी भाषा है, एवरीबडी हैज टू स्पीक दिस. आई थिंक इट डजंट सर्व एनी पर्पस एनीवेयर. people should just let people should just let each other be, and let everybody do their own thing. तो वो आपको कल्चर बैंगलोर में काफी अच्छा देखने को मिलेगा. दैट एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. देयर पीपल आर वेरी लेस जजमेंटल. It's a little different from the north of India. Uh, but yeah, it's fantastic. This city is it has a bright future. तो ये तमिलनाडु में है ना? No, this is in Karnataka. Okay. Chennai is in Tamil Nadu. Okay. And this is in Karnataka, the uppermost southern state. This is next to Maharashtra basically. So वो भी एक रीजन है इसकी. जो ज्योग्राफी भी आप देख लीजिए, इधर गोवा है, उधर महाराष्ट्र है, और ये सबसे ऊपर की सदर्न स्टेट है. तो जो इसके कुछ हिस्से हैं वहाँ पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी, विच इज क्लोज टू महाराष्ट्र. फिर कुछ हिस्से जो है मतलब वहाँ पे आपको मतलब इट्स अ वेरी डाइवर्स प्लेस. जैसे आप कर्नाटका में मैंगलोर ही चले जाएंगे तो मैंगलोर का कल्चर बिल्कुल अलग है. उनकी लैंग्वेज इज तुलु, एंड देयर लैंग्वेज इज क्लोज टू मलयालम, बिकॉज मैंगलोर इज वेरी क्लोज टू केरल. मतलब मेरा एक दोस्त है सफवान उसका नाम है, और वो मैंगलोर में ही उसका घर है, और वो बताता है कि मेरे एक कमरे में केरला का सिग्नल आता है फोन पे और एक कमरे में कर्नाटका का आता है. तो या सो ही लिव्स इन अ विलेज व्हिच इज वेरी क्लोज टू केरला. या बट his family is mostly in Qatar, but he lives here. He runs a business. He runs a huge business. वो कोकोनट वाटर होता है ना, उसको वो बॉटल्ड वाटर is what he sells. तो कहीं मैंने पढ़ा था कि अमेज़न का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो अमेरिका में नहीं है, इंडिया में है. Right. वो कहाँ पे है? इसी आपके बेंगलोर में है? कहाँ है वो? We have multiple offices. I'm not from the tech background, so I may not be able to tell you as to which is the largest office that Amazon has. They have offices down south, multiple offices. But yes, this is true that they have the largest office in India, and उनके operations भी यहाँ पे काफी बड़े हैं. In fact, I was shocked to know recently that there is no Amazon in Pakistan. I was really, really shocked because we take these things for granted like anything. We think that everybody has access to it. It was quite a shock to me that, okay, a company like Amazon is not there in Pakistan. Because, I mean, the kind of job they are doing is phenomenal. It is tremendous. You get things like in a day, like you order something in the night, you get it next day. You don't have to go out. And in case you don't like it, you can return it. So it's an extremely customer centric company, and I think Pakistanis are really missing out on this one. I mean, everybody should have Amazon. हमारे यहाँ तो पेपॉल भी नहीं है और उसकी वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो अमेज़न पे आप बुक्स की बात कर रही हैं या बाकी चीजों की भी? Everything, sir, you name it, you get it. From appliances to phones to your washing machine, dining table, sofa, clothes. I don't remember the last time I went to a shop to shop. And I don't remember the last time I withdrew cash. I'm not joking. I have forgotten my debit card pin. Because you go to a sabzi wala, he will tell you to phone pay him, to Amazon pay him, or to Google pay him. And the ready walas also, the pani puri walas also, everybody. You go to any business. I mean, जो स्पेशली जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्होंने तो इतनी जल्दी डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट किया है बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स देयर लाइफ इजी. दे नाउ हैव बैंक अकाउंट्स एंड so they have an incentive to have a bank account from the government side. So yeah, it's crazy, and I think
it's really sad that you don't have access to. I mean, PayPal तो हम लोग पता नहीं 2011-12 में भी यूज करते थे. I was working with a company जहाँ पे हमारी foreign से candidates आते थे. We used to offer courses. तो उनकी पेमेंट्स पेपाल के थ्रू ही आती थी. So this is back in 2011. So it's shocking that Pakistan still doesn't have PayPal. तो अभी क्या क्या चीजें हैं वो जिनमें पाकिस्तान जो है इंडिया से सीख सकता है, बेनिफिट कर सकता है, अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हों तो? I think one is that attitude of not wearing your ideology or politics on the sleeve, on your sleeve. I think Pakistanis tend to do that a lot. Okay. And not only ideology but religion also. Religion also. ठीक है. India में भी I would say it's picking up now. A lot of people are now getting assertive. The Hindus, they are thinking, okay, हमें भी ये करना चाहिए कि एयरपोर्ट पे बैठ के अपना हनुमान चालीसा पढ़ लिया, क्योंकि ये लोग शायद ऐसे अपना डोमिनेंस क्रिएट करते. तो वो खरबूजे को देख के खरबूजा जो है वो रंग बदल रहा है हमारे यहाँ. बट आई थिंक लार्जली वो इंडिया से ये चीज लर्न कर सकते हैं पाकिस्तानीज कि अपने जो कोर इंटरेस्ट होता है ना, देखिए हम सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम और एनर्जी है. अभी मैंने आज 3 शोज कर लिए तो मेरे को रात को लगेगा मैं बहुत थक गई हूँ. ठीक है. हम सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम और एनर्जी है. टाइम भी बहुत ही लिमिटेड है. यू कैन गो एनी टाइम. ठीक है. वी आर ऑल लाइक for short term, right? It's not forever. So I think we need to realize that, and we also need to stop living in that notion that there is an afterlife. Okay, all religions propagate that idea, but I think we should try to make the most out of the life that we can currently feel and enjoy. Now, afterlife is something we don't know. It happens, it exists or it doesn't exist. So we need to start living in the present and smell the coffee. And I think the Pakistanis can probably also take motivation from the fact that there are so many Indians who have important positions inside the White House. They are influencing the big tech because they are the CEOs of these tech companies. आई थिंक आप हसद भी करें पर उससे सीखें भी कि भाई ये लोग का देखो इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है, कल को ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करेंगे एंड ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट? यूएस इज ऑलरेडी कंसिडरिंग टू मेक अमेंडमेंट्स इन देयर ओन लॉ which is seen by a lot of Pakistani analysts as favor that the US wants to grant to India कि हम काटसा इंडिया पे नहीं हमने लगाया तो हम लॉ ही चेंज कर देते हैं. तो मतलब ये जो चीजें होती है ना, ये ओवरनाइट नहीं होती हैं. A lot of work goes into it. You have to get good brains to make your policies. So I think the Pakistani side, they और एक थोड़ा अपना जहन खुला रखें, try to find reason. मतलब I'm sure that faith is always blind and it kind of confines people by saying okay, this is not questionable. But don't have that approach in life. Everything can be questioned. Question more and have that hunger to know more, and don't be hostile to people who have a different point of view. I mean, that also happens a lot in India, but I think primarily जो पाकिस्तानी हमसे यही सीख सकते हैं कि यार अपने इकोनॉमिक को ना सेंटर में रखो. I think सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. अब पाकिस्तान की चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट हो या लोग हो, मैंने देखा कि बहुत ही ज्यादा जज्बाती है वो, बहुत ही ज्यादा. जैसे फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे, उससे क्या हो जाएगा भाई? अगर आप में मादा तो आप बोलो सब मुसलमान फ्रांस छोड़ दो. क्या छोड़ सकते हैं मुसलमान? एक सफीर को निकालने से ये सिंबोलिज्म है. फिर एक आपकी एमएनए थी जो कह रही थी असेंबली के अंदर कि हम जो है यहाँ से रॉकेट मार देंगे इजराइल के ऊपर, कोई आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. फ्रांस ने, अगर ईयू ने हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस हटाया तो हम अपने गहने दे देंगे, हम अपने पैसे दे देंगे. आपको लगता है कभी मौका आएगा तो ये लोग कुछ देंगे? आई मीन, दीज आर द एलीट हु बेसिकली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके उन्होंने रखा हुआ है, इतना ज्यादा लैंड फंसा के रखा है अपनी कंट्री का, जस्ट सो दैट देयर चिल्ड्रन हैव अ सेफ फ्यूचर. I don't think they actually mean all of that. So people need to stop, BSing. I think, and the public has to be more pragmatic. मतलब यहाँ पे लोग जाग गए हैं, but I think Pakistan still a lot of large number of people are sleeping. जैसे इमरान खान की जो following है, मतलब मोदी जी की भी following है ideological, जो उनको इसीलिए पसंद करते हैं. But he has also delivered, right? Imran Khan has not delivered anything. So there's no reason for anybody to follow him. उन्होंने एक इस्लामोफोबिया पे ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अवेयरनेस लाई है,
थैंक्स टू हिम दुनिया में तो अवेयरनेस थी नहीं. He's again propagated a twisted idea of Islamophobia, only, you know, making the case of the Muslims worse actually by propagating the kind of ideas he's been propagating. I mean, कौन 21st century में कहता है कि हर country में हमारे जैसे blasphemy laws होने चाहिए? Pakistan already is at the receiving end. It receives a lot of criticism for having such draconian and vague blasphemy laws. Now, here is a prime minister who's telling the whole world, why don't you follow us? And you also have laws like this to tackle Islamophobia. I think phobias can only be tackled by having open conversations and getting to know each other better. You cannot say, okay, you don't believe I'm peaceful, so I'm going to kill you. The person is not going to believe you're peaceful if you're wanting to kill him for not believing in that, right? So it's very self-defeating. सो मे बी हमें बनिया बोलते हैं पाकिस्तान में, हिंदू बनिए तो ठीक है भाई, बनियाबाजी सीख लो, बिकॉज इट्स क्लियरली वर्किंग फॉर द बनियाज. हमारे यहाँ एक मौलवी साहब थे खादिम रिजवी, राइट. वो उनसे किसी ने पूछा ना कि भाई पाकिस्तान ने बहुत सारे पैसे देने हैं दूसरे मुल्कों के, तो उन्होंने कहा मेरे पास उसका है हल. राइट. अगर हम गवर्नमेंट में आ गए तो हम उनसे कहेंगे कि भाई देखो, इंटरेस्ट जो है वो तो हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम आपको देंगे और उस वक्त देंगे जब हमारे पास होंगे, और अगर वो चू चुरा करें तो फिर हम उनको कहेंगे लो जी ये गौरी मिसाइल आ रहा है जी, आ रहा है आपकी तरफ. Oh my God, imagine. No, but tell me one thing, आपके यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, बट लोग इंटरेस्ट तो लेते हैं ना, बैंक्स तो चार्ज करते हैं ना. अभी भी वहां पे एक पिटिशन चल रही है कि भाई इंटरेस्ट जो है वो उसको अबॉलिश किया जाए, तो उस पर भी हमारे उलमा जो हैं बहुत खिलाफ हैं. कुछ बैंकों के जो सुप्रीम कोर्ट में गए कि इसके खिलाफ जो है ना वो एक इंजंक्शन ली जाए कि इंटरेस्ट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड. बट जब तो ये एक बड़ा बड़ा इशू है ये एक. जब पाकिस्तान भी सऊदी से उनको कुछ रेमिटेंस या कुछ भी वो रिलीफ देते हैं, पैसे के तौर पे ले लें या ऑयल के तौर पे ले लें, तो उस पे इवन पाकिस्तान एज अ स्टेट हैज टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. तो मतलब आई थिंक द मुस्लिम वर्ल्ड शुड आल्सो काइंड ऑफ सॉर्ट इट अमंग देमसेल्व्स as to if it is haram or actually halal, because they also seem to be transacting in a manner where they are charging each other interest. So it's a bit confusing for us non-Muslims as to what exactly is to be followed. क्योंकि हमने देखा है कि इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं लोग पाकिस्तान को, वो पे भी कर रहे होते हैं, करने वाले भी इस्लामिक नेशंस हैं. सो या यही प्रॉब्लम है ना, दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट. ठीक, एक चीज में पाकिस्तान ने बहुत ही क्लियरली, पाकिस्तान आर्मी ने डिसाइड कर रखा था कि नो मैटर व्हाट वी कैन नॉट हैव पीस विद इंडिया. आई थिंक दे शुड आल्सो स्पेल इट आउट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस और देयर पब्लिक एज टू व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू मेक ऑफ दिस नेशन. अब कितने 2 साल हो गए हैं जब बाजवा साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बोला कि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच जो नेशनल सिक्योरिटी की है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं. बट मैन, दैट हैज टू रिफ्लेक्ट इन एक्शंस ना. यू कैन नॉट जस्ट गिव अ स्टेटमेंट, क्रिएट सम media bites and then forget about it. You have to act on it. अच्छा, पिछले दिनों बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई. यहाँ पे इमरान खान पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने तोशा खाने के जो गिफ्ट थे जो फॉरेन डिग्निटरीज ने दिए थे वो उन्होंने 20% पे करके तो वो तोहफे बेच दिए. Right. तो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था. तो कुछ ऐसे हमारे चैनल जो नरेंद्र मोदी साहब पे बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, उन्होंने भी उनकी तारीफ की, उनका क्लिप चलाया कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का तो मेरे पास इस तरह के गिफ्ट आते थे और हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता था कि इनका क्या करें, तो मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने कहा कि इनको ऑक्शन कर दो. एंड वी मेड अबाउट 1000 बिलियन रुपीज एंड दैट मनी वाज स्पेंट ऑन गर्ल एजुकेशन. राइट. राइट. हाँ, मैंने वो फॉलो किया कि सडनली नरेंद्र मोदी को बहुत सारे जो उनके मुखालिफ हैं वो भी कोट कर रहे थे कि देखें उसने अपनी सैलरी कैसे जो है गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के कॉज पे डोनेट कर दी. बट ठीक है, वो तो होता ही है जब जिसको कन्वीनियंट लगता है जो लोग कोट करते हैं. बट आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड एट द फैक्ट कि जब ये न्यूज़ शुरू में निकली थी तो इमरान खान साहब ने इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. बट बाद में उन्होंने बोला कि वो मेरे गिफ्ट थे और मेरी मर्जी मैं जो भी करूं, मतलब इसी तरह का उन्होंने कुछ जवाब दिया था. सो मतलब तभी तो मैंने बोला कि वो पाकिस्तान की जितने लीडर्स रहे हैं ना, अगर आप मुझे रेट करने के लिए बोलेंगे तो आई थिंक मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इमरान खान इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी इन पाकिस्तान. Pardon me if I say something which might offend your viewers or listeners,
बट आई थिंक ही इज क्वाइट कंफ्यूज्ड इन सो मेनी वेज एंड वो ऐसे ही करते हैं. उन्होंने पहले बोला था कि मैंने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तोशा खाना का, और बाद में उन्होंने कह दिया कि हाँ मैंने किया. बट दैट्स सो शेमफुल, क्योंकि आप जब गिफ्ट्स लेते हैं तो यू ऑल्सो हैव टू गिव गिफ्ट्स, राइट? एंड दैट इज ऑन द स्टेट. दैट्स it's the taxpayers money which goes into it. So you have absolutely no right over it. अगर आपको unless कि कोई पर्सनल कैपेसिटी में कभी कोई आपको कुछ दे रहा है, वो अलग बात होती है. बट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, he has absolutely no right over anything that he's been gifted. अच्छा सोनम जी, ये बताइएगा कि आप क्या अपना एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे जो हैं अब्दुल बासित, उनके भी क्लिप्स देखती हैं, यूट्यूब वीडियोस? राइट. उनका क्या होता है कि वो कब क्या बोल देंगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है. नंबर ऑफ टाइम्स इज ऑल्सो कम टू माई स्पेसेस. मैंने उनको देखा है कि वो उनका जो ओपिनियन होता है ना, वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब जैसे जो रिसेंटली जो बुक आई है, क्रिएटिंग अ न्यू मदीना बाय वेंकट, जो इंडियन है धुलीपला, तो उसमें भी I heard that he has appreciated that book, basically, या which pokes hole in the whole Pakistani narrative and that two nation theory. Now, a former ambassador of Pakistan to India appreciating that book, that shows कि वो he at times plays to the gallery. But more or less, I think I like his views. At times, he also says things which are very close to reality, and you can appreciate them in an academic sense. अच्छा, हमारे यहाँ एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, मोस्टली वो लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप बट इन हिजेमनी, जिसको उर्दू में कहते हैं बालादस्ती या चौधराहट. Right. कि इंडिया अपनी चौधराहट चाहता है, बालादस्ती चाहता है, वो फ्रेंडशिप नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ. तो आप कैसे देखती हैं इस आर्ग्यूमेंट को? I mean, see, an argument without a logical explanation is no argument. It's just your opinion. And I wouldn't treat it as an argument. See, you say so, fair enough, you have that opinion, but you must explain as to why do you feel that way. Because a lot of these people will also say, India ने तो कभी पाकिस्तान को accept ही नहीं किया. If you referring to the same person, जो आपके साथ ही आए थे मिर्जा साहब, उन्होंने भी ये बोला कि हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया. यार, जिस नेशन को आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस कैसे दे रखा था? और हाउ इज इट फिर पॉसिबल? इंडिया की एम्बेसी कैसे है इस्लामाबाद में? ये तो खैर राइट. अब्सर्ड बात है. या जी. आप जब किसी नेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं तभी तो आपकी एम्बेसीज होती है ना वहां पे. तो दिस इज अ फ्रिवोलस आर्ग्यूमेंट, आई वुड से, नॉट एन आर्ग्यूमेंट एट ऑल. इट इज मोर ऑफ peddling falsehoods in the name of news and in the name of actual feelings in a country. I think it's very irresponsible, and that is not true at all. India has accepted Pakistan from the day of its creation, and I don't think India, look, I mean, we have no interest, right? As Indians, hame kya milega? We are not claiming any territory which was given to Pakistan at the time of partition. We are not saying hame ye de do, hame wo de do. आपके यहाँ पे जो भी separatist movements भी हैं, दे आर नॉट सेइंग ना कि हमारा इंडिया से ये रिश्ता है या हमारा हम इंडिया चले जाएंगे. काफी सारे ये जो सिंध मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, कई बार मेरे स्पेसेस में भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लोग हमें मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर रहे. तो आई टेल देम कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है. यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर कंट्री, आपका हक है, आप एहतजाज करें. मतलब वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, देयर इज अ वर्ल्ड ऑर्डर, वी आर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स. यू कैन नॉट से ओ इंडियंस की मिलिट्री आ जाए. हमारे लिए क्या इंसेंटिव है? हमें क्या मिलेगा? वी डोंट वांट टू लाइक गेट इनटू दैट सिचुएशन. हम भी पाकिस्तान को इस चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं ना, दैट यू डोंट मेडल विद आवर इंटरनल अफेयर्स. So as an Indian, like, it's my duty that I don't, while I am open to listening to somebody's grievances, but I can't give them ideas because I'm not in their position. And I know that my country will never be interested to involve itself militarily in any of these conflicts. कि चलो जी हम इनको आजाद करवा देते हैं, उनको करवा देते हैं. हमें मिला क्या किसी को आजाद करवा के? So there's no reason, there is no incentive for India to basically do that. अच्छा, what would you say by way of closing thoughts? I'm sorry? What would you say by way of closing thoughts? Okay, I would say that you know it is certain and it is advisable that we all move on from where we were. It is very important that the dialogue continues, even though a lot of people in India tend to believe that
it's good this way कि हम हमारी कोई बातचीत नहीं है. I would say कि तब ठीक था अगर बॉर्डर पे भी कुछ नहीं हो रहा होता. See, people tend to ignore people from the border because they are living in cities. Now I am that people from the border. It is this conflict is directly impacting my life, my family's life, and our lifestyle there and standard of living, because it is we have been living under the shadow of terrorism forever in JNK. We've not seen many investments. And so my closing thoughts would be that all of us should be open to knowing more. This also goes to Indians, because we also kind of tend to think that everybody is in Pakistan is walking around with an AK-47 on him, and he believes in Ghazwa Hind. And while I agree that a vast majority of people are hostile to India because of their ideological biases, there are also many, many people who are open to knowing more, knowing better. They are just like you and me. And I think we should make more effort to reach out to like-minded people and not give up on anything. I think मैं एक चीज में strongly believe करती हूँ कि वो कहते हैं ना कि ना उम्मीदी शिर्क होती है. So I strongly believe that hopelessness is actually a sin. Till the time you're alive, you should keep kicking, keep trying to learn better, knowing each other more, because nothing can fix this entire situation except for us humans. See, the birds have no borders, they can move freely. We have created barriers for each other for so many reasons and so many years. I think it's time we move on. And मान लो हमारे बीच में ताल्लुकात नॉर्मल नहीं भी होते हैं, at least we should carry on with our own things and not be interested in each other's problems and fix our own issues. And that's the approach we need to have. थैंक यू वेरी मच सोनम. तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे वक्त दिया, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू. तो लेट्स होप टू रिमेन इन टच. Sure, sir. You are welcome, and I'm again very grateful to you for having given me this opportunity to sit next to you, at least on camera, and speak like two friends. I really, really appreciate it, and I really value it. I don't say so many words generally. You can see all my discussions, but I must accept I'm a huge, huge fan. And I wish you luck, more power to you, and keep doing what you do. And we will keep speaking as and when it suits you and me. Good luck, sir. थैंक यू वेरी मच.